कुछ ही दिनों में इस अभियान का क्या रूप होगा, क्या डिटेल्स होंगे और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी मनरेगा को बचाने के लिए सारे राज्यों में एक अभियान शुरू करेगी, वो प्लान अभी तैयार हुआ है और उसकी जानकारी विस्तार से हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे प्रभारी संगठन केसी वेणुगोपाल जी आपसे बातचीत करेंगे। वेणुगोपाल जी। Thank you, Jairam ji. Good morning to everybody. Happy New Year to all my media friends. 27th December, an important meeting of the Congress Working Committee held at New Delhi to discuss about the BB Gram G law enacted by the new government, enacted by the Union government. As Jairam rightly pointed out, there was a serious discussion, deliberation happened that day about the future course of action against this new law. The Congress Working Committee decided to launch a national-wide agitational campaign, Manrega Bachao Sankram, throughout the country. Basically, the design of the new law is very clear: to kill Manrega, which is one of the best demand-driven scheme of this country, poverty elevation scheme of this country. Not only this country, internationally renowned. You people know that every year 5-6 crore rural families found work in their own villages. Hunger reduced, migration declined, rural wages rose, and durable assets such like a pond, roads, canals, and check dams were created. During droughts, floods, COVID, economical crisis period, Manrega became the strongest safety net for the poor people of this country. Women, Dalit, Adivasis, and the most marginalized benefited the most. Women accounted for nearly 60% of total workdays, gaining equal wages, income security, and social dignity. But now under the BB Gram G, employment is no longer a right. Work will be provided only in panchayats notified by the central government. If a panchayat is not selected, people there have no entitlement to work regardless of poverty or distress. This converts a constitutional promise into a government permission. Manrega was demand-driven. BB Gram G introduces budget-capped normative allocations. Once funds are exhausted, work stop no matter how desperate families are. This silently killed the legal right to work. Basically, now Manrega was one of the most decentralized scheme. Now everything Delhi decides, village is going to suffer. Earlier, Gram Sabhas and Panchayats planned work based on local needs. Now BB Gram G centralized all decision making, funds, works, assets, placing full control in Delhi. Many Panchayats will receive zero funds, destroy local planning, and violating the spirit of the 73rd constitutional amendments.
Basically, panchayat are reduced to clerk implementing the central schemes. The bill introduces a 60 days period during peak agricultural seasons. This means government can legally deny work when rural distress is higher. Manrega provided notified wages linked into inflation. VB Gramchi removes this certainty. There is no guaranteed wage rate. Wages depend upon what center fix for each panchayat. This opens the door to underpayment and wage suppression, pushing workers further into poverty. Earlier, center paid 100% of the wages. Now that has been reduced to 60%. Poor and migrant states is going to suffer it. What is the result? Result, deny work or divert fund from health, education and welfare activities. State has only that option. Technology also, basically technology is a tool of transparency. Now this new scheme, technology is going to be a tool of exclusion. Workers with worn out fingerprints, poor connectivity or low digital literacy will be denied wages. Basically now, big thing is, in Manrega there is no big contractor can enter now. Big contractor can enter in Manrega. But now, the contractor's space is provided. Manrega created village level assets not covered under other schemes. VB Gramji allows convergence with the large infrastructure programs like PM Gati Shakti. This converts panchayats into labor suppliers for central contractors, reintroducing contractors through the back door and increasing leakages. Then they are claiming, their only one claim is that they are increasing the days from 100 to 125 days. These are very bogus claims, which is not going to happen at all. If you are reducing the wages from 100% to 60%, how can you expect that main days are going to increase? Biggest false. Who will suffer the most? The question is in front of our nation is that raising rural employment, suppression of wages below minimum wages, increased distress, migration and bonded labor, sharp decline in women's participation, disproportionate impact on Dalit and Adivasi families, weakening of village economies. Then, removing the name of Mahatma Gandhi. Is also a most condemnable thing. Mahatma Gandhi is not a symbolic alone. Mahatma Gandhi's name is not stand for a symbolic alone. Gandhi represented dignity of labor, village self-rule, and moral responsibility of the states. Erasing his names reflect an attempt to erase the right-based vision behind Manrega itself. Why the Congress launched Manrega Bachao Sankram? To defend the right to work, protect Panchayat Raj institutions, stand with the women, workers, Dalit, Adivasis and the rural poor, take this issue to every village of this country. Our clear demand is to withdraw VB Gram G Act, restore MGNREGA its original right-based form, restore people right and to restore people right to work and Panchayat authority. This is what Indian National Congress demanding through this Manrega Bachao Sankram.
Congress Working Committee also given a clear-cut program to our PCCs to implement. It will start on 8th January 2026. 8th January 2026, PCC level preparatory meetings will be held at PCC headquarters with the participation of Pradesh level leaders in the presence of General Secretary in charges of the states. This meeting will focus on briefing the leadership on the implication of the BB Gram G bill, finalizing district-wise responsibilities, identifying key speakers, and ensuring uniform political messaging and mobilization planning for all phases of the campaign. 10th January 2026, district level press conference will be organized at all district headquarters to formally launch the Manrega Bachao Sangram. DCC President and senior district leaders will address the media explaining how the proposed law dismantles the right to work, weaken Panchayati Raj, suppresses the wages, and increase rural distress. 11th January 2026, one-day fast. A one-day fast will be observed at district headquarters or near statue of Mahatma Gandhi or Dr. B.R. Ambedkar. This program will symbolize Congress Party moral commitment to the dignity of labor and constitutional rights. Senior leaders, elected representatives, party functionaries, social activists, and Manrega workers will participate and engage the public on the dangers of the BB Gram G bill. January 12 to 29 January, Panchayat level chapels and mass outreach. During this phase, Panchayat level chapels will be organized across all Gram Panchayats to directly engage Manrega workers, women workers, marginal farmers, and landless laborers. Advise impact of the BB Gram G bill on employment, wages, and local self-government will be explained. Simultaneously, a letter from the Honorable Congress President and LOP Lok Sabha Rahul Gandhi will be personally delivered to Gram Pradhans, former Gram Pradhans, Rozgar Se Vikas, and Manrega workers, Vidhan Sabha level Nukkat Sabhas and pamphlet distribution will be conducted simultaneously to reach wider sections of the population. This will happen between January 12 and 29. January 30th, 2026, Martyrs Day, on the Shahid Diwas, peaceful sit-ins will be organized at ward and block levels with active participation of Manrega workers and grassroots level activists. Observed on Martyrs Day, this program will be emphasized on non-violence, constitutional values, and the importance of protecting the right to work. 31st January to 6th February, district level Manrega Bachao Dharna. Manrega Bachao Dharna will be organized at the offices of the district collector or district magistrate. DCC leadership, grassroots workers, and Manrega laborers will participate in large numbers. Memoranda demanding withdrawal of the BB Gram G bill and restoration of Manrega in its original right-based form will be submitted to the district administration. On 1st of February, nationwide, we will have a strong protest. The details of that protest will be informed later. 7th February to 15th February 2026, state level Vidhan Sabha Garavos
This can be done in front of the Vidhan Sabha or Raj Bhavan or any of the central government offices which is convenient for the PCCs. State level Garavos of Vidhan Sabha will be organized under the leadership of PCC with a large scale, tens of thousands of workers, elected representatives, Manrega beneficiaries is going to participate in large scale Karavo. That is from 7th February to 15th February. Finally, 16 February to 25 February, the campaign will culminate with the 4 mega zonal rallies organized by the AICC, bringing together the participants from the multiple states. This will serve as a national assertion of the Congress Party resolve to defend the right to work and rural livelihood. Location and dates will be communicated separately. This is the program from 10th January to 25th February. We are going to hold around 45 days long national campaigns, Manrega Bachao Sankram. We request all media friends cooperation for this massive program to enforce a right to work for the poor people of this country. Thank you. शुक्रिया वेणुगोपाल जी। मैं संक्षिप्त में यही बताऊंगा कि ये मनरेगा बचाओ अभियान नहीं है, ये मनरेगा बचाओ संग्राम है। इस शब्द के पीछे बहुत कुछ मायने हैं, आप समझ जाएंगे। ये अभियान सिर्फ तक सीमित नहीं है, ये एक संग्राम है जिसका पहला चरण 8 जनवरी को शुरू होगा और 25 फरवरी तक चलेगा। पहली बात तो ये है, तो ये संग्राम है। दूसरी बात, जो अधिनियम अभी पारित हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में, जो मनरेगा को हटाया है, बड़ा नाम तो बड़ा है, पर एक ही गारंटी है उस अधिनियम। अगर आप देखें, सारे अधिनियम पढ़े, ठीक तरह से पढ़े, आपको ये पता चल जाएगा कि गारंटी एक है और वो गारंटी है केंद्रीयकरण। वो एकमात्र गारंटी है। रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, राज्य सरकारों के लिए वित्तीय सहायता की कोई गारंटी नहीं है जो मनरेगा में था। गारंटी यह है कि केंद्र सरकार तय करेगी आवंटन कैसे होगा, एलोकेशन राज्यों को किस आधार पर होगा, वो जानकारी नहीं है, तो केंद्र सरकार तय करेगी अलग अलग राज्यों को कितना पैसा मिलेगा। और ये न केवल ये, पर किन पंचायतों को भी आवंटन होगा। पंचायतों को 3 कैटेगरी में बांटा जा रहा है, कैटेगरी 1 A B C 1 2 3। तो ये एकमात्र गारंटी जो है भयंकर केंद्रीयकरण। ये रोजगार का हक नहीं है, ये कानूनी हक नहीं है, ये संवैधानिक हक नहीं है, ये एक केंद्रीय कार्यक्रम परियोजना है। जो मनरेगा 2005 में पारित हुआ था, साफ लिखा गया था कि 5 साल के अंदर ये पारित हुआ और गैजेट नोटिफिकेशन 5 सितंबर 2005 को। और इस अधिनियम में ये साफ कहा गया है कि 5 साल के अंदर सारा कानून पूरे देश में लागू होगा। मैं आपको याद दिला दूं कि 5 साल नहीं लगे, 3 साल के अंदर 2008 में ही मनरेगा सारे जिलों में लागू हुआ, सारे जिलों में लागू हुआ। हालांकि अधिनियम में कहा गया था कि 5 साल के अंदर आप करिए,
पर यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 3 साल के अंदर सारे कानून को पूरे जिलों में लागू किया। इस अधिनियम में जो नया अधिनियम लाया गया है, ये क्लॉज हटाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह क्लॉज हटाया गया है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसका माने यह है कि मनरेगा जो सारे जिलों में लागू हुआ था कानूनी हक के तौर से, अब केंद्र सरकार तय करेगी रोजगार की परियोजना कहां लागू होगा, किस राज्य में लागू होगा, किस आधार पर लागू होगा और किन पंचायतों में लागू। ये भयंकर केंद्रीयकरण 70-45 साल में नहीं देखा गया। ये भयंकर केंद्रीयकरण। और दूसरी बात, मनरेगा कहता था कि ये कानूनी हक है, संवैधानिक हक है, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अब कहा गया है कि एक फॉर्मूला 60% वित्तीय सहायता केंद्र सरकार से आएगा और 40% राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। मिसाल के तौर से इस साल राजस्थान में मनरेगा का बजट 10,000 करोड़ और सारा 10,000 करोड़ केंद्र सरकार से आता है। नए अधिनियम का नतीजा ये होगा कि राजस्थान सरकार को 4,000 करोड़ रुपया अपनी ही राशि से डालना पड़ेगा। कहाँ से आएगा किसी को मालूम नहीं। सभी राज्यों की हालत यही है। और ये जो पहली बार एक कानून में लिखा गया है कि 60-40 फॉर्मूला लागू होगा, ये अनुच्छेद 258 का साफ उल्लंघन है संविधान का। ये संविधान का अनुच्छेद 258 कहता है कि सम एज मे बी एग्रीड, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहमति के बाद ही ये फॉर्मूला तय होगा। ये तो अपने मनमर्जी इन्होंने तय कर लिया है, किसी से बातचीत नहीं हुई, किसी राज्यों से बातचीत नहीं हुई, कोई आम सहमति बनाने की कोई प्रयास नहीं की गई और थोपा गया है 60-40 फॉर्मूला। तो ये संविधान का उल्लंघन है और इसकी चुनौती तो हम जरूर न्यायालय में देंगे। पर मुख्य बात यह है कि 3 कृषि काले कानून का जो आंदोलन था वो दिल्ली केंद्रित आंदोलन था। मनरेगा बचाओ संग्राम दिल्ली केंद्रित नहीं है, पंचायत केंद्रित है, ब्लॉक केंद्रित है, जिला केंद्रित है, राज्य केंद्रित है। ये बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। जो किसान आंदोलन था दिल्ली केंद्रित आंदोलन था, पर मनरेगा बचाओ संग्राम दिल्ली केंद्रित नहीं। राज्यों में, जिलों में, प्रखंडों में और खास तौर से पंचायत स्तर पर ये संग्राम होगा। इसके सारे विस्तार में वेणुगोपाल जी ने आपको जानकारी दी है। ये जानकारी सभी राज्यों को भी भेजा जाएगा, आज ही भेजा जाएगा। पर हमारी मांग ये है कि मनरेगा जिस रूप में पार्लियामेंट में पारित हुआ था 2005 में, आम सहमति से नहीं, सर्वसम्मति से। बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। आम सहमति आप बना सकते हैं, पर सर्वसम्मति से पारित हुआ था।